Hello students, today's our topic is joint stock company. Okay, now see your first meaning. A joint stock company is a voluntary association of persons who generally contribute capital. Okay, this is a voluntary association. Okay, they carry on a particular type of business which is established by law. Okay, which is established by law यहाँ पे बोला है. Okay, and the total capital of joint stock company is known as share capital. जो भी total capital होगा what you call share capital, and it is divided into small units called as shares. अभी जो भी capital होगा they are divided in small units. What do you call shares? And every members hold same shares, and these members are called as shareholders. Means who purchase the shares is called as shareholders. In India, every joint stock company is registered as per the Companies Act 2013. Registration किस हिसाब से हो गया? The Companies Act 2013. Okay, one definition is given here. See, there are I think 2 or 3 definitions. You can select any one. I think first one is easy. Okay, see, a joint stock company is a voluntary association of individuals for profit having capital divided into transferable shares. Okay, voluntary association है and profit having capital divided into transferable shares. The ownership of which is the condition on membership. Okay, that is the definition of joint stock company. Now see features one by one. First one is voluntary association. Person of any caste religion can become the member of joint stock company. कोई भी हो सकता है. Okay, any caste, any religion. Okay, there is no restriction regarding number of shares purchased by one person. कितना भी purchase कर सकता है. There is no restriction. Okay, and after death, share of any shareholder are transferred to his nominees. आफ्टर डेथ हाँ वो जो भी शेयर होल्डर होगा ओके उसके डेथ होने के बाद उसके नॉमिनीज को शेयर ट्रांसफर कर दी जाएगी एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन नहीं है ओके नंबर 2 रजिस्ट्रेशन सी रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 मीन्स यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है ओके अकॉर्डिंग एक्ट 2013 an application is prescribed format must be submitted to the registrar of company. जो भी फॉर्मेट है ठीक है वो फॉर्मेट में उनको सबमिट करना पड़ेगा कहाँ पे टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एंड नेसेसरी रजिस्ट्रेशन फीस आर पेड बाय द प्रमोटर्स और उनको जो भी रजिस्ट्रेशन फीस होगी दे हैव टू पे एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन that is the incorporation certificate is issued to the company after registration and a private limited company can immediately start its business after getting incorporation certificate. Okay, we are talking about private limited company. Okay, they can start okay after getting incorporation certificate. Now say about public. A public limited company must obtain okay उनके पास कंपल्सरी चाहिए what certificate of commencement of business. क्या चाहिए उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दैट इज ट्रेडिंग सर्टिफिकेट टू स्टार्ट इस बिजनेस दिस इज फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी okay now see number 3 registered office see the address of registered office of the company is mentioned in the memorandum of association वहाँ पे mention किया जाएगा and all the important document of a company are kept in registered office जो भी होगा वहाँ पे एक जो भी necessary documents है they have to kept example क्या क्या रखना पड़ेगा जस्ट सी रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स देन एनुअल रिपोर्ट्स मिनट्स बुक देन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देन प्रोस्पेक्टस देन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एसेट्रा जो भी नेसेसरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उनको रखना पड़ेगा ओके नाउ सी नंबर 4 आर्टिफिशियल लीगल पर्सन ओके सी अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ ठीक है हम बोल सकते हैं कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन ये आपको फिलअप में भी आ सकता है सी इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टीज आफ्टर रजिस्ट्रेशन ओके एग्जांपल इज गिवन हियर इट कैन बाय और सेल एसेट बोरो मनी देन ओपन ए बैंक अकाउंट एसेट्रा अभी यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन बोला है दैट्स व्हाई दे कैन बाय और सेल एसेट देयर आफ्टर दे कैन बोरो द मनी otherwise they can open the bank account etc like a human being okay therefore only law can create joint stock company okay and only law can wind up it हम clearly बोला है law can create joint stock company create कर सकता है otherwise they can wind up okay next one number 5 separate legal status there is separate legal existence of joint stock company यहाँ पे clearly दिया है there is separate legal existence of joint stock company okay because of registration you can say and it is separate legal entity apart from its members
ओके, इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, मेंबर से अलग रहेगा, अलग एंटिटी रहेगी. नेक्स्ट नंबर 6, कॉमन सेल. कॉमन सेल, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. ये हमने पहले देखा था, कंपनी कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन है. ओके, इट डज नॉट हैव any physical existence like human being, physical existence nahi hai like human being, but therefore it is necessary to make provision for the signature of the company. इसलिए कुछ उनको प्रोविजन करना पड़ेगा like a human being, उनको signature as a type signature you can say. Okay, and every joint stock company has a common seal. Okay, every joint stock company has a common seal, ठीक है, एंड इट इज यूज एज अ सिग्नेचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. और ये कॉमन सील किस हिसाब से यूज होता है, एज अ सिग्नेचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, की जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या है, सिग्नेचर है, ठीक है. एंड सील हैज नेम ऑफ द कंपनी इंग्रेव ऑन इट एंड इट इज कंसिडर एज द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंपनी की, बिकॉज ऑफ वॉट, दिस इज द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. And therefore, a seal is kept on the custody of the company secretary. Company secretary के custody में रहेगा क्या, ये seal. A seal is fixed on all important documents of the company, but the document must be signed by. ये document sign होना चाहिए. By कौन? By company secretary and by minimum 2 directors. Company secretary का sign होना चाहिए and minimum 2 जो भी डायरेक्टर हो गए उनका सिग्नेचर चाहिए. यहाँ पे इसीलिए दिया है, but the document must be signed. Okay. Next one, number 7, limited liability. The liability of shareholders is limited up to the extent of, ठीक है, कहाँ तक है, extent of unpaid face value of shares. कहाँ तक है, extent of unpaid face value of shares held by them, वहाँ तक है limited. Okay, therefore private property of shareholders is not used for the payment of company's liability. आपको पता है limited liability आने के बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज नहीं करने पड़ेगी. अगर अनलिमिटेड होता दे हैव टू यूज प्राइवेट प्रॉपर्टी. ओके, Number 8, transferability of shares. The total share of the company is divided into small shares, total shares, okay, divided into small shares, and to become the member of the company it is compulsory to purchase a shares. अगर आपको member होना है कंपनी का, okay, then what you want, you have to purchase a share. After purchasing shares you will become a member, and the share of public limited company are freely transferable. क्या बोलना पे, द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. इट मीन्स अ शेयर होल्डर कैन बाय और सेल शेयर्स विदाउट परमिशन ऑफ द कंपनी. परमिशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, दे कैन बाय और दे कैन सेल. एंड द शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल. और प्राइवेट कंपनी का क्या बोला है, द शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, मीन्स उनको परमिशन लगेगा कंपनी का. ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन. Okay, now say next, number 9, separation of ownership and management. Shareholders are the owners of the joint stock company. ठीक है, shareholder कौन है, they are the owners of joint stock company because of what, they purchase the shares, उन्होंने shares purchase किए हैं. Okay, they elect their representatives to look after day to day business activities. इसलिए उन्होंने क्या क्या रहा है कि representative elect किए for the day to day activities, business activities, and these representatives are called as director. और वो representative जो है उनको हम क्या बोलेंगे, we call directors. And the directors appoint professional managers and other employees for the day to day working of the company. उसके बाद डायरेक्टर क्या करने वाले, they appoint professional managers को हायर करेंगे और एम्प्लॉय हायर करेंगे फॉर द डे टू डे वर्किंग ऑफ द कंपनी, डेली काम जो भी रहेगा कंपनी के, फॉर दैट पर्पस. एंड दिस एम्प्लॉय वर्क ऑन सैलरी बेसिस. और ये जो भी एम्प्लॉयज हो गए, ओके, उनको सैलरी मिलेगा, सैलरी बेसिस पे रहेंगे. Therefore, the ownership of joint stock companies with shareholder and the management in the hands of directors. So there is a separation of ownership and management. इसलिए हम बोल सकते हैं there is separation of ownership and management, दोनों अलग अलग है. Next, number 10, perpetual succession. It has a separate legal existence. Its existence does not depend upon its members. It's not depend upon members. Okay, member पे depend रहने वाला है क्या, नहीं. Means the death, then retirement, you can say insanity, insolvency of any member or employee does not affect the existence of the company. Means डेथ होती है, रिटायरमेंट होता है, इंसैनिटी, वट एवर, जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस पर उसका इफेक्ट कंपनी पे गिरने वाला है क्या, नहीं. That's why joint stock company enjoys perpetual succession. Okay, number 11. This is the last point, membership. In public limited company, minimum number of members are 7. पब्लिक ने कितना बोला है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 7.
देर इज नो लिमिट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए लिमिटेशन दिया है क्या? नहीं. पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर रिक्वायर्ड 7 एंड मैक्सिमम देर इज नो लिमिट. नाउ सी अबाउट प्राइवेट. इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स आर 2. प्राइवेट में कितना चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स आर रिक्वायर्ड 2 एंड मैक्सिमम आर 200 as per Companies Act 2013. Minimum 2 and you can say maximum 200. Okay, as per Companies Act 2013. And every shareholder is co-owner of joint stock company. यहाँ पे क्लियरली दिया है कि every shareholder, okay, is co-owner of joint stock company. Okay, thank you.